Subscribe my channel and press bell icon to get all notifications. Hello students, as you know we are discussing the chapter microbes in human welfare and we discussed the role of microbes in different fields. Now we will see that how these microbes are useful as a biocontrol agents. So first of all we need to understand that what is the meaning of this biocontrol or biological control. इसका मतलब क्या है? This biological control refers to the use of biological methods for controlling the plant diseases and pests. Plant disease और pest के against biological मैथड्स को ही यूज करना, उसे बोलेंगे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बैक्टीरियाज, वायरसेस, इंसेक्ट्स इन्हीं को यूज कर रहे हैं टू किल द पेस्ट, टू किल द डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं. तो बायोलॉजिकल मैथड्स को यूज करते हुए अगर आप प्लांट को डिजीजेस और पेस्ट फ्री बना सकते हैं, देन दिस मैथड इज नॉन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल. First of all, let's see what are the needs of these biological methods or what is the need of these biopesticides. इन biopesticide की जरूरत क्यों है? The need of these biopesticides is due to some reasons. Now, as you know that in the normal agriculture method, जो प्रोसीजर होता है वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स. And these chemicals are the chemicals which may damage the crops. ये क्रॉप को भी डैमेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ they can damage the flora and fauna of this area और they can decrease the biodiversity. जब एक फ्लोरा फोना कहीं भी किसी भी एरिया का एक स्पीसीज अगर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है. So they will affect the biodiversity and the ecosystem. नेक्स्ट रीजन इज दैट दे एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन. इस तरीके के केमिकल्स को यूज करने से कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं जिनमें इन केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर जनरेट हो जाती है. सो इफ वी यूज दीज केमिकल्स अगेंस्ट दीज स्ट्रेन्स दे विल नॉट बी गेट किल्ड बाय दीज chemicals because they become resistant. Third reason is that the chemical can kill both useful and harmful organism indiscriminately. ये जो केमिकल्स होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, ये यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझते वो. सो इन कुछ रीजंस को देखते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड यूज और अडॉप्ट द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इन प्लेस ऑफ केमिकल कंट्रोल so that we can save our environment. So these are the some reasons for controlling these biopesticides or biological control methods. Now let's see what are these biopesticides. Different types of bioherbicides, bioinsecticides, they all also included in the category of biopesticides and they have just some important benefits. They are beneficial for all of us because of some reasons like दे आर नॉन परसिस्टेंट. ये नॉन परसिस्टेंट होते हैं यानी कि ये बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में नहीं रहते. दे कैन बी इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, मीन्स दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड दे आर नॉन टॉक्सिक ऑल्सो. दे मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम and they decrease the chances of environment pollution because they are the natural method, so there is no chances for the environment pollution. Because of these reasons it's very necessary that we should use these methods. Now let's see some important example of such kind of biological control. First example जो हमारे सामने है यहाँ पे, that is of bioherbicides. First bioherbicide was developed in 1961 at the name of this bioherbicide was that it was developed by a fungus. It was developed by the fungus or derived by the fungus. Its name was Phytophthora palmivora. तो ये जो फंगस थी, इस फंगस से फर्स्ट बायोहर्बिसाइड जो था वो डिराइव किया गया. अनदर एग्जाम्पल जो है दैट इज द कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रोथ. कैक्टाई प्लांट जो होते हैं, कैक्टस प्लांट, कैक्टस के बारे में सब जानते हैं. कैक्टस प्लांट की ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को यूज किया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं कॉकनियल इंसेक्ट्स. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये कैक्टस के अंदर ग्रो करते हैं. कैक्टस प्लांट सबने देखा हुआ है. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल लिया गया है कैक्टस का. लाइक कैक्टस प्लांट है जिसमें इसकी जो पार्ट होता है
कैक्टस का पार्ट, इसके अंदर इस इंसेक्ट्स के लार्वा ग्रो करते हैं एंड दीज लार्वा दे ईट दिस प्लांट, दिस कैक्टस प्लांट एंड डिस्ट्रॉय इट. So by this methods, these overgrowth of these cactus plants can be controlled by the using of insects, cochineal insects. Cletoblastis cactorum, this is the scientific name of this insect. Nowadays the latest technique is used, which is the production of transgenic crops. This transgenic crop method is also very beneficial, जहाँ पे हम genes को changes करते हैं. We can insert some resistant gene in the plants so that they can become resistant against different types of pests, insects and weeds. So this method we will discuss in detail in the biotechnology unit also. So these are some examples. Now let's see the examples of bioinsecticides. In the case of bioinsecticides, the most important example that is about the Bacillus thuringiensis or BT. This Bacillus thuringiensis or BT, this is the bacteria, and this bacteria has some specific proteins. They have some genes which make a protein, and the name of these genes are the cry genes. They have cry genes which make the protein which is known as cry protein, and these proteins are toxic for the insects. ये जो protein होता है ये toxic होता है insects के लिए, and it can kill the insects. So this technique or this toxic protein is utilized for the development of bioinsecticide. यहाँ पे क्या किया जाता है, इन बैक्टीरिया से इन क्राई जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दिस और वी कैन से दैट दीज टॉक्सिक मटीरियल, यहाँ पे हमने देखा है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से लार्वाज को या इंसेक्ट्स के लार्वाज को किल करने के लिए इस टॉक्सिक प्रोटीन को यूटिलाइज किया जा रहा है जो बैक्टीरिया फॉर्म कर रहा है. बैक्टीरिया इज फॉर्मिंग दिस टॉक्सिन जस्ट फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन, अपने लिए यूज कर रहा है, बट इसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर आवर प्रोटेक्शन ऑफ आवर क्रॉप्स. सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टॉक्सिक फॉर्म हुआ है इस टॉक्सिक फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूजिनेसिस के स्पोर्स को कलेक्ट किया जाता है, एंड दे आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ सैशेस में फॉर्म किया जाता है, एंड देन these sachets कैन बी डिजॉल्व विद द वाटर एंड स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स. क्रॉप के ऊपर स्प्रेइंग होती है. जब ये क्रॉप्स के ऊपर बैक्टीरिया का स्प्रे किया जा रहा है, these बैक्टीरिया डू नॉट डिस्ट्रॉय द क्रॉप, ये क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बट व्हेन इंसेक्ट्स ईट these crops, then these bacteria get entered inside these insects. इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है. इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद वहाँ पे उन्हें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलता है, एल्केलाइन एनवायरनमेंट मिलता है, जिस एनवायरनमेंट में इस बैक्टीरिया में क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, and due to this formation of this toxic proteins, these bacteria get killed. Insects get killed. Insects की death हो जाती है. So in this way, this bacteria is utilized to kill the insects. Insects को kill करने के लिए use किया जा रहा है bacteria, and the name is Bacillus thuringiensis, or in short we can call it BT. Nowadays many BT crops are formed. जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसजेनिक क्रॉप का पोर्शन देखा है, तो ट्रांसजेनिक यानी कि बीटी जीन्स को भी क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के बीटी क्रॉप्स फॉर्म की जाती हैं, जहाँ पे प्लांट्स नेचुरली क्राई प्रोटीन फॉर्मेशन करने लग जाता है, एंड इट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंसेक्ट्स. So this is the one example. Another example is of a fungus, that is free living soil fungus, जो कि बायोकंट्रोल एजेंट की तरह काम कर रहा है इन सेवरल प्लांट डिजीजेस, एंड द एग्जांपल और द नेम ऑफ दिस फंगस इज द ट्राइकोडर्मा. Trichoderma is the name of the fungus which is utilized for controlling many plant diseases. So here we saw one example which is a bacteria and another example of a fungus. Now let's see some more example, and these are also very important. These are the viruses. Next example is of viruses. These viruses are known as baculovirus. ये जो वायरस होते हैं, these viruses are the pathogen used for attracting the harmful insects. ये harmful insects पे अटैक करके उन्हें किल करने का काम करते हैं, और यहाँ पे harmful insects भी हो सकते हैं और arthropods भी हो सकते हैं जो एज एन पेस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं. And these baculoviruses are related to a genus which is known as nucleopolyhedrovirus. This is also very important. These baculoviruses, they are related with the nucleopolyhedroviruses genus, and these are the species specific and narrow spectrum insecticidal effect.
ये जो वायरसेस होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज पे ही काम करते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट होता है. दे डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी अदर स्पीसीज एंड दे डू नॉट अफेक्ट द क्रॉप ऑल्सो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ लेडी बर्ड. Coccinella, this ladybird is used to control the aphids. Aphids को destroy करने के लिए use हो रही है. Similarly, the dragonflies or Sympetrum is also used to control the mosquitoes. ये mosquitoes को kill करने के लिए use किया जाता है. So here we discussed or saw the different examples where the microbes are used as a bioherbicides and as a bioinsecticides. Now let's see what is IPM. IPM means, or we can say that IPM stands for the integrated pest management. Integrated pest management, this technique is very useful and it is required to save the environment from the agrochemical pollution and to achieve the higher agriculture productivity. IPM और integrated pest management की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम environment को save कर सकें against the chemicals which are used in the agriculture and to achieve the higher agriculture productivity. These methods or these techniques can be utilized. So this is about the use of microbes as a biocontrol agents. Now let's see how the microbes are useful as a biofertilizer. In this topic we will see that how these microbes are providing the different type of nutrition to the plants crops, and some of these parts of these topics are already discussed with you in previous chapters. Now let's see the use of biofertilizers instead of the chemicals ones has been known to keep the soil fertility intact for a longer duration. Biofertilizer का जो यूज़ है बहुत टाइम से होता आ रहा है and they are the organisms like, इस केस में हम किन्हें यूज़ कर सकते हैं, like we can use the bacteria, fungi or cyanobacteria. They can be used as a biofertilizer and they enrich the soil. ये soil को enrich करते हैं, they provide the nutrition to the soil. सबसे पहले बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखेंगे. द बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम बैक्टीरिया एंड एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया. These bacteria are the bacteria which fix the atmospheric nitrogen and enrich the soil with the nitrogen. So they are nitrogen providing bacteria. Similarly, the fungus can be used. The fungus which we know that remain in the roots of the higher plants and they are present in a symbiotic association. This symbiotic association is known as mycorrhiza. So mycorrhiza is another example which is used as a biofertilizer. The fungus which forms the mycorrhiza, they belongs to the genus Glomus. So this is important term which you have to keep remember. Glomus, they belongs to the genus Glomus and they form the mycorrhiza. And the function of these mycorrhiza is to absorb the phosphorus. ये phosphorus को absorb करते हैं soil से and then pass it to the plants और से plant को pass करते हैं and it show the resistance to the pathogens and salinity. अब ये जो fungus है ये plant को pathogens के against resistance power भी provide करवाते हैं and salinity के against भी. So this fungus, this mycorrhiza is very important for the plants. Third example is cyanobacteria. Cyanobacteria, they are also known as blue-green algae. They are autotrophic microbes which can fix the atmospheric nitrogen. They can also fix the atmospheric nitrogen. Example, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria. These are the cyanobacteria. Cyanobacteria we have already discussed in our previous chapters. So these cyanobacteria are very important biofertilizers in the paddy fields. पैडी के फील्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं. दे ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. So this is the example where the different microbes can be used as a biofertilizers. Here the bacteria, fungus and cyanobacteria, they can work as a biofertilizer. With this we have completed our chapter here.